सादर प्रणाम। एनसीईआरटी की वेबिनार सीरीज लिसनिंग टू लर्न सुने और सीखे में के 28वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गगन गुप्ता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में कार्यरत हूँ। आज का दिन हम सभी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत मुख्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट के साथ इस अंक को संलग्न कर रहे हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। आज के इस संस्करण में हमारे साथ प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय, जो कि फॉर्मर डीन एंड प्रोफेसर एमेरिटस एट स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से संबद्ध हैं। आज का दिन, जैसे मैंने कहा, कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशंस के साथ ये मैच हो रहा है। आप इस प्रोग्राम को व्यूअर्स PM ई-विद्या चैनल 9 और 11 पर सीधा देख सकते हैं। साथ में NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी देख सकते हैं। आप अपने प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर भेज सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का समावेशन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथ ही में आप हमारे इस टेलीफोन नंबर जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस पर आप हमें टेलीफोन से अपने प्रश्न बता सकते हैं। साथ में ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उन पर भी आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। आज के इस 28वें संस्करण में हमारे साथ प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय हैं, जो कि एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर, प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर आज हमसे चर्चा करेंगे। उनका संबोधन हमारे लिए बहुत मुख्य है, जो कि आज नेशनल साइंस डे 2022 की मुख्य विषय से मिलता जुलता है। मैं इससे पहले प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय के बारे में कुछ बताऊं। आज हम नेशनल साइंस डे के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। 93 years ago, on February 28, 1928, a brilliant discovery put India on the map of world science, a day we celebrate as National Science Day today. It is celebrated every year to commemorate the discovery of the Raman Effect. On this day, Sir Chandrasekhara Venkata Raman had announced the discovery of the Raman Effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1930. Briefly speaking, the Raman Effect is a phenomenon in which light that passes through a material is scattered inelastically, and the wavelength of the scattered light is changed because it has caused an energy state transition in the material's molecules. Raman effect has numerous applications in various fields, from pharmaceuticals to biology to geology, and from semiconductors to life sciences. In almost all areas in science and technology, it can be used to do qualitative or quantitative non-destructive microscopic chemical analysis and imaging, etc. The Raman scanners, a device used to detect if someone is carrying illegal substances, uses the Raman effect principle. Friends, on recommendations from the National Council for Science and Technology Communication, popularly called NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, designated February 28th as National Science Day. This is the day when Raman observed the effect in his laboratory. The first National Science Day was celebrated on February 28th, 1987, and since then it is being celebrated every year all over India in schools, colleges, universities and other academic, scientific, technical, medical and research institutions. I am sure that all of you are aware that this year the Office of the Principal Scientific Advisor, Government of India and the Ministry of Culture are jointly celebrating a Vigyan Sarvatra Pujyate program from 22nd of February to 28th of February, and on this occasion 75 lectures at 75 places, 75 activities are taking place, which is coinciding with the आज़ादी के 75 वर्ष, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सारे देश में इस पर चर्चाएं चल रही हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसके विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान पुस्तक मेला लगा हुआ है, जो कि फ्री है और सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है।
On this occasion, various awards for popularization of science are announced by the Government of India. These awards include the National Award for Outstanding Efforts in Science and Technology Communication through print media including books and magazines, the National Award for Outstanding Efforts in Science and Technology Popularization among Children, National Award for Outstanding Efforts in Science and Technology through Innovative and Traditional Methods, Augmenting Writing Skills for Articulating Research, also called AVSAR Award, Science and Engineering Research Board, that is SERB, Women Excellence Award, National Award for Young Women Showing Excellence through Applications of Technology for Social Benefits. Activities on this National Science Day are mainly focused to demonstrate various science projects and latest researches by scientific institutions. The celebration also includes public speech, radio, TV talk shows, exhibition of science movies, science exhibitions based on themes and concepts, watching night sky, live projects and researches, demonstrations, debates, quiz competitions, lectures, science models, exhibitions and many more activities. Almost all universities and all scientific institutions are involved in doing these activities today, or around 22nd to 28th of February every year, and this year too. Besides making an effort to mark the importance of contribution made by scientists towards the development of our nation and the world as a whole, the celebrations of National Science Day also used to create awareness about the role of science in society, to spread a message about the importance of science used in the daily life of the people, to display all the activities, efforts and achievements in the field of science for human welfare, to discuss all the issues and implement new technologies for the development in the field of science, to give an opportunity to the scientific minded citizens in India, and to encourage the people as well as popularize science and technology through innovations, etc. Friends and colleagues, yes, this platform of NCERT has been providing an opportunity to learn about diverse issues related with the contemporary and relevant issues with the school education. Besides addressing to the social changes and problems, this forum is also created for connecting the global Indian science and technology diaspora with the motherland. Today, during this 28th session of the webinar series, Listening to Learn, we at the National Council of Educational Research and Training are also commemorating the discovery of Raman Effect. We have Professor C.K. Varshney with us, who is to share his thoughts about the plastic pollution, which is essentially a human-made crisis. This discussion is indeed very much in line with the theme of the National Science Day 2022, that is integrated approach in science and technology for a sustainable future. Friends and colleagues, let me inform that towards the end of this session, we will be screening a small video film which is originally owned by a Norwegian TV channel NEK and Sky News. The NCERT, the National Council, the Department of Education and Science and Mathematics, and we as a science community are very much grateful to this NEK TV channel for providing us the permission, for giving us the permission to screen this video as an example in today's talk. I have with me Dr. C.V. Shimre from my department and a colleague of ourselves, a colleague of mine. I request Dr. Shimre to welcome Dr. C.K. Varshney and to introduce him to the public. Yeah. Please. Yeah. Thank you. Indeed, we are here to listen to a very important lecture on plastic pollution. As we are all aware, plastic is everywhere. It has been reported in the deepest seafloor, in the Arctics, in the poles, and also on top of the Everest. So that's the reach of plastic as of today. And we all benefit out of that, no doubt about it, and we use it everywhere for its convenience, durability, and easy way of production and all kinds of things. So it has benefited, no doubt about that. But at the same time, this plastic has caused so much havoc in our lives, in the ecosystem. It has caused so much problem. It has clogged our soil, our water. It has reached the ocean floors. It has caused a lot of pollution everywhere, not sparing
any of our ecosystem. And we're also aware about, the impacts of this very useful thing that we call plastics, because we are paying so to say, we're paying a cost for the benefits that we're receiving from plastics. I mean, it's at a very high cost that we are using these plastics. We all know about all kinds of pollutions that happens, and more so, not just plastics, more so today we are more concerned about eradicating the single-use plastic, because we cannot really do without plastic. We will be still using plastic maybe for a few decades or maybe forever, but we really want to eradicate use of this single-use plastic. And this is also the attempt of the government of India, and the government of India came up with this notification, the Plastic Waste Management Amendment Rules 2021, which prohibits identified single-use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022. And so this is the effort of the government of India, and 2022, we're already into 2022, and this is the year we are trying to get rid of this single-use plastic. And today our speaker will be talking about this plastic pollution, including its impact on climate change and also the economic implications. So our speaker will be elaborating on this very important topic. Before we give time to the speaker, let me take this privilege to introduce him. Dr. C.K. Varshni is former Dean and Professor Emeritus at the School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, and Distinguished Adjunct Professor, Asian Institute of Technology, Bangkok. And he is also member of Governing Board of Wetlands International, South Asia. Professor Varshni has also taught courses at various universities, including the Banaras Hindu University, University of Delhi, IGNOU, TERI, School of Planning and Architecture, New Delhi. He has also been the Academic Director of Leadership in Energy and Environmental Design, India program, which is an initiative of Rockefeller Foundation. He has also been a Senior Fellow at East-West Center, Honolulu, Hawaii. He has also been a consultant to Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Canadian International Development Agency, World Wildlife Fund, International Union for Conservation of Nature, National Council of Applied Economic Research, Indian Institute of Public Administration, and Environmental Planning and Coordination Organization, Bhopal. Professor Varshni was the founder secretary of the National Committee on Environmental Planning and Coordination. He was member secretary of Indian delegation to the historic 1972 United Nations Conference on Human Environment at Stockholm, and he participated at the first and second United Nations Environment Program Governing Council meetings held at Geneva and Nairobi, respectively. He was a leader of Indian delegation to Conference of Parties of Ramsar Convention held at Groningen in the Netherlands. He was founder secretary, National Committee of UNESCO's Man and Biosphere Program. And in this capacity, he initiated for the first time ecosystem-based studies in the country. He was chairman of Environment Research Committee of the Ministry of Environment and member of the National Wetland Authority. He has also been member of Environmental Impact Assessment Expert Committees for thermal power plants, nuclear power plants, and mining. He was on the editorial board, Ecological Economics, and founder secretary of the Indian Society of Ecological Economics. Professor Varshni has also received several awards, of which is the Swami Pranavnanda Saraswati Award for Environmental Sciences and Ecology and Vasvik Award of Environment Sciences and Technology. He is a fellow of Indian Association for Air Pollution Control and International Society of International Botanists. He has authored several books and published research papers in several leading international journals. So that's, he has done tremendously, contributed tremendously in his field. That was just in brief. So, sir, thank you very much for being with us this morning, and the time is all yours, sir. So, Professor Varshni, next 45 minutes are yours, please. Particularly
program on this very important week, which we are celebrating as the Science Week. So, and also I'm very thankful to Dr. and Professor Simre for introducing me to the audience and also giving a brief introduction about of the plastic pollution. Today's topic is very important, and it is really something on which the global community is working very hard to find a solution to the problem of plastic pollution. And today, आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्लास्टिक पोल्यूशन से कैसे हम लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या इसके कारण हैं और क्या तरीका है कि हम इससे निजात पा सकते हैं। ये वास्तव में एक मानवकृत क्राइसिस है जिसका कि हमको अभी अच्छी तरीके से पता लग रहा है कि किस तरीके से ये भविष्य में समस्याएं हमारे लिए खड़ी कर सकता है। तो ये शुरू करने से पहले कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड। प्लास्टिक एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है हमारे जीवन में, हर तरीके से इससे हमें फायदा मिलता है और प्लास्टिक की वजह से हमारे बहुत सारे काम हैं बड़े आसानी से हो जाते हैं। जो लोग चश्मे पहन रहे हैं, जैसे मैं पहन रहा हूं, आप पहन रहे हैं, तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेंस प्लास्टिक का बना हुआ है और सुबह से और रात तक सारे टाइम हमारी जीवन के कार्यकलाप में प्लास्टिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्लास्टिक सिर्फ हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही काम नहीं आती हैं, इनका हमारे जो मॉडर्न हमारी जो लाइफ स्टाइल है और हम कहेंगे जो हमारी आधुनिक सभ्यता है जिसके बारे में हम लोगों को काफी गर्व है, उस सब में प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की नई समस्याओं के सुधार में और उनके समाधान में भी प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खास तौर से जो हमारी विंड टरबाइन्स हैं उनके ब्लेड्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो कार्बन एमिशन को रोकने में भी इनका बड़ा साथ है। उसके बाद में फर्नीचर प्लास्टिक का बना होता है, तो इससे लकड़ियों का कटना और जंगलों को बर्बाद होने से बचाने में प्लास्टिक का बड़ा हाथ है। तो इन सब तरीकों को देखते हुए हम देखते हैं कि प्लास्टिक हर तरीके में हमारे लिए सहायक साबित हुई है और इससे बड़े सारे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम मिला है और जॉब मिला है। सो मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड अराउंड प्लास्टिक एंड प्लास्टिक बिजनेस। अब इन सब चीजों के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में और मनुष्य के जीवन में थोड़ा ही समय पहले से आई है। इट इज 1907 में 1907 लियो बेकलैंड प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट बेकेलाइट which was responsible for the first synthetic introduction of the plastic to the humanity. बेकेलाइट से हमारे बिजली के स्विच बनने लगे और बहुत तरीके की चीजें बनने लगी, जबकि म्यूजिक के रिकॉर्ड और यहाँ तक के जो चलचित्र की जो फिल्म है जिससे कि चारों तरफ सिनेमा फैला और बॉलीवुड और हॉलीवुड जैसे नाम बड़े हुए और इतने बड़े कारोबार बने, वो सब प्लास्टिक की फिल्म के ऊपर ही शुरू हुए। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और उसकी हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन पुराने जमाने में सारी फिल्में उससे बनी, रिकॉर्ड्स बने। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये प्लास्टिक का जो असली काम शुरू हुआ तेजी से, मास प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1950 where some of the leading companies are DuPont and others were responsible for mass production of plastic. And particularly plastic became very, very important in Second World War, where the parachutes, which used to be built with silk, as well as with some kind of a cloth, were replaced by plastic. So I think that plastic got a great boost from the Second World War and started entering into our day-to-day life in a big way. As plastic is cheap, it's lightweight, easy to produce, has led a production boom over the last century. And it has been growing at an exponential rate. And the trend is likely to continue in the future. इन सब की जरूरत के बाद और इन सब खासियत के बाद भी
चीजें ठीक नहीं हैं. All is not well. A large percentage of plastic produced is single-use plastic, a major contributor to the global plastic crisis. अगर आप सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या को देखें तो आप देखते हैं कि तरह तरह की चीजों में आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं. सुबह से जब आप उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, दांत मांजते हैं और ब्रश करते हैं तो प्लास्टिक, तो हर तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है. इस्तेमाल करने के बाद हम उन्हें फेंक देते हैं. कप में चाय पी करके हम फेंक देते हैं, चम्मच से चला करके हम उसे फेंक देते हैं. तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसको हम बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं, और ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा सामान हमारे पर्यावरण के अंदर एक भार के रूप में पैदा होता है और इकट्ठा होने लगता है. नेक्स्ट स्लाइड. प्लास्टिक मोटे तौर से वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, क्योंकि हर काम के लिए एक अलग किस्म की प्लास्टिक होती है, लेकिन अगर ब्रॉडली हम देखें तो प्लास्टिक को हम पॉलीमर भी कहते हैं, रेजिन्स भी कहते हैं. ये सब सिनोनिम की तरह ये वर्ड होने लगे हैं. तो इसमें दो तरह के होते हैं, तो थर्मोसेट प्लास्टिक होती है, दूसरी है थर्मोप्लास्टिक. नाउ कैन नॉट बी मेल्टेड. थर्मोस्टेट प्लास्टिक्स कैन नॉट बी मेल्टेड. थर्मोसेट प्लास्टिक जैसे बिजली के स्विच वगैरह हैं और ये सब चीजें हैं, इनको मेल्ट करके आप दोबारा नहीं बना सकते. और थर्मोप्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्मी में पिघल जाते हैं गर्मी होने से, लेकिन ठंडे होने के बाद में फिर वो अपनी शक्ल ले लेते हैं और उनको हम मेल्ट कर सकते हैं. इनमें दो तरह के होते हैं, एक तो सेमी क्रिस्टलाइन और दूसरे होते हैं एमॉर्फस. तो ये जो सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो एमॉर्फस होते हैं, वो चूरा चूरा हो जाते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सेमी क्रिस्टलाइन है उनके मुख्य उदाहरण हैं पेट बॉटल जो कि हम यूज करते हैं, नायलॉन है और पॉलीइथिलीन है. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका के इस्तेमाल हम करते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको ने इसका इस्तेमाल नहीं किया हो और जिनकी लाइफ में इन्होंने अपना उपयोगी काम नहीं किया हो. नेक्स्ट स्लाइड. प्लास्टिक के बर्तनों के पीछे और एट द बॉटम और एट द बैक ऑफ द प्लास्टिक यूटेंसिल्स यू विल फाइंड देयर आर ट्रायंगल्स इन व्हिच सम नंबर्स आर गिवन. Now these numbers are given by the manufacturer to indicate that which type of plastic is used in the manufacture of these articles. Now there are 7 types, 1 to 7. Now these chasing triangles with arrows, the chasing arrows of these triangles are giving these numbers which indicate which type of plastic is being used. Now just to give you an idea that the PET bottles are belonging to the number 1 and 2 is high density polyethylene and the third one is the nylon and the fourth one is low density polyethylene and 5 is polypropylene and likewise. So you will see that at the bottom I have indicated that number 1 and 2 are easy to melt and to recycle, while others are very difficult or their level of difficulties of recycling is indicated. So I think that you will find that these things are very difficult and the number printed in the chasing arrows symbol does not mean that the plastic items are recyclable. Most of the plastic containers are only type 1 and 2. So I think this is a very good indication given by the industry identifying as to which plastic is used for which purpose. Next. Now, as the plastic, all plastic cannot be easily recycled or cannot be converted, you will find that the plastic waste keeps on accumulating, and this kind of site is a universal site. You will find that anywhere where is a solid waste dump, you will find these kind of things are pretty common in sight. And the landscape is full of this kind of picture. And I'm sure that everyone is quite familiar. As you travel, you will see these kind of things everywhere. So plastic waste is found in every corner of the globe, right from the mountain top, the highest level, that is Mount Everest,
to the deepest ocean depth, about 11,000 meters, which is a marina trench, where also the plastic is present. And you will be surprised to know, and it will be quite interesting to know, that not only the plastic is available throughout the biosphere, that is the highest and the lowest point of our Earth, but at the same time it has also traveled into the space. तो ये जो अपना स्पेस फ्लाइट होती है, और जिस तरीके से जो स्पेस फ्लाइट के साथ में हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो ये वहां पर अपने साथ प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं ले जाते हैं, खाने के डिब्बे एक्सेट्रा सब प्लास्टिक के बने होते हैं। और ये भी एक तथ्य है और साफ है कि मून के सरफेस पे काफी सारी प्लास्टिक जा चुकी है। तो इट हैज नॉट ओनली रियली कॉन्कर्ड द एंटायर अर्थ, बट it has also traveled an interplanetary space where it has already made its mark. So I think अब आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का कितना भारी विस्तार हो चुका है और हो रहा है, और इस तरीके से प्लास्टिक जो है चारों तरफ छा रही है और बढ़ रही है। प्लास्टिक accumulates because they don't biodegrade, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और ये सालों साल इसी तरीके से बनी रहती है। थोड़ी बहुत इसको घटती है, थोड़ा बहुत इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। तो सालों साल नहीं, बल्कि मैं कहूँगा दशकों तक और शताब्दियों तक ये प्लास्टिक यूं की त्यों पड़ी रहती है। इंडिया जनरेट्स 1000 tons of plastic every day, causing serious problem of disposal. Plastic waste is suffocating our planet and endangering wildlife as well as human beings. तो ये एक ऐसी समस्या है कि जो प्लास्टिक जहां एक तरफ बहुत उपयोगी है, दूसरी तरफ इसका अधिक उपयोग और नॉन रेस्पॉन्सिबल यूज फॉर द सिंगल यूज प्लास्टिक देयर इज समथिंग that is really causing a very, very serious problem and undermines its value that I have already described earlier. So I think here is a very serious problem that the plastic is creating. The problem is that since it keeps on accumulating, so its volume on Earth keeps on increasing. So I think it is going to be a permanent feature for many, many generations to come, and that is the whole problem. अभी आगे हम देखेंगे कि इस प्लास्टिक से क्या हमें दिक्कतें हो सकती हैं। Now 5% plastic is only recycled because इसको कलेक्ट नहीं किया जाता है, इसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता है कूड़े से, तो इस वजह से, and 12% get incinerated, इसको जला देते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। तो इंसिनरेशन बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और करीब 80% ऑफ सारी प्लास्टिक जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो फिर इसी तरीके से वेस्ट होकर के पर्यावरण में एक समस्या बनती है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जो समस्या ये प्लास्टिक की बढ़ रही है, और जो इसकी समस्या का जो स्कोप बढ़ रहा है वो मानवकृत है। इट इज एंटायरली ह्यूमन मेड बिकॉज ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल यूज एंड डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक, जो कि अभी तक हम पिछले कई दशकों से करते चले आ रहे हैं। तो ये सब समस्या एकदम वो है जिसको कि रोका जा सकता है, और अगर हम अपने क्रियाकलापों को समझें, उनको थोड़ा ऑडिट करें और अपने को थोड़ा संभालें, और एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से अगर हम प्लास्टिक का यूज करें, तो इन समस्याओं से हमको एक तरीके से निजात मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। प्लास्टिक किल्स एनिमल्स। आई थिंक ये हमें से काफी लोगों ने देखा होगा कि जितने ये कैटल है और अन्य जीव जंतु है, ये प्लास्टिक के साथ में और भोजन के बीच में ज्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं कभी कभी, और प्लास्टिक को ये खा लेते हैं। तो टर्टल्स, व्हेल्स, स्ट्रे कैटल, कैमल, एलिफेंट आर डाइंग फ्रॉम ईटिंग प्लास्टिक. Studies have found that 71% of the seabirds and 30% of the turtle insect plastic, and this greatly increases an animal's mortality rate. Now whales, one of the largest animal that we know
which is a marine animal, an elephant, which is another largest animal that we know, all of them become victim of the plastic. Now, this is something very serious. Recent studies have shown that in our environment, 9 to 11 billion tons of plastic has already been accumulated, and its number is increasing from all directions. And it is believed that by 2050, 99.8% of all seabirds will have plastic in their body. So plastic is everywhere. It is really creating a very serious problem to animals both on land, in fresh water, in marine water, and as well as the birds which fly and which only visit water and land for a short period of time. And there is hardly any creature which is not affected by the plastic. I would like to share a very important statistics which has been very, very recently submitted to UNEP. And it says that there are 2,141 species of the marine ecosystem, that is in the sea, where the plastic has been found in their body. Now, this study is based over 850 and odd studies covering about 1,511 sites around the world. So on this basis, you can see that how plastic is entering the animal world as well as our food chains on the basis of these animal food that we eat and the other products that we have. Plastic pollution and marine organisms, I have already explained in a big way. Plastic which leaks into ocean presents danger to wildlife and fisheries. जो हमारे मछुआरे लोग हैं, जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको भी प्लास्टिक की वजह से बहुत दिक्कत होती है, और वो अपनी मछली की जो उनकी एक जो प्रोडक्ट है और जो उसकी प्रोड्यूस है उसके अंदर बहुत कमी आती है. प्लास्टिक की वजह से मछलियां छोटी हो जाती हैं, पूरी ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति के अंदर और उनको पूरा रिवार्ड नहीं मिल पाता है. Marine life is seriously threatened through enlargement, suffocation, and ingestion. Whale, turtle, seabirds, I have already mentioned. Animals which stomach full of plastic have no urge to eat. जब एनिमल के अंदर और जानवरों के अंदर प्लास्टिक पहुंच जाती है तो उनको भूख नहीं लगती है. Their nervous system doesn't give them a signal of hunger, and therefore they feel full. They don't eat, and thus they die out of starvation. Some animals mistake plastic bags for food, which is often the case with land and sea animals also. In this connection, as Dr. Gagan Gupta has mentioned, that we are going to show you a short film where you will see how a whale is dying because it has ingested large amount of plastic. This is through the courtesy of the Norwegian NEK films, which have been kind enough and graceful enough to provide necessary sanction for screening this film on this occasion to NCERT. Next. Great Pacific Garbage Patch. जो प्लास्टिक की वेस्ट है वो हमारी नदियों के द्वारा सीधे सीधे समुद्र में जाती है. तो our rivers are serving as a expressway for plastic to carry to the ocean. और जब ये ओशन में जाती है तो वहां पर ये फिर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है. And it is not uniformly distributed in the ocean. There are certain hot spots where the plastic gets collected. There are 5 gyres in the ocean, and सबसे ज़्यादा important Pacific, North Pacific gyre है. और यहाँ पे ये प्लास्टिक का पैच इतना बड़ा हो गया है और इतना इसका बड़ा विस्तार है कि इसको आकलन किया गया है जो अभी रिसेंटली वो अबाउट 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है.
ना ये करीब करीब फ्रांस के दूने हिस्से के बराबर है। और अगर मैं और ठीक से बताऊं तो भारतवर्ष के पूरे क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। इंडिया का क्षेत्रफल करीब 3.2 एंड ऑड स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये है 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये बढ़ रहा है, इतना नहीं, ये बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि और जो 4 गायर हैं वहां पर भी ये इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस नक्शे में दिखाया गया है गायर्स की पोजीशन, जो कि एक साउथ अटलांटिक में है और एक इंडियन ओशन में है, और दूसरा जो है साउथ पैसिफिक में है। और इस तरीके से यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उतनी तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी काफी मात्रा में यहाँ पर प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सी करेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द काउंटर करेंट्स दैट आर देयर। तो आई थिंक इन सब की वजह से प्लास्टिक की जो एक समस्या है वो भारी है। प्लास्टिक समुद्र में यूनिफॉर्मली नहीं डिस्टर्ब है। देयर आर फ्यू इकोसिस्टम्स व्हिच आर पर्टिकुलरली इन threatened because of the plastic accumulation. Importantly, they are mangroves and corals and estuaries. So I think the plastic pollution is a problem which is very serious to different communities which live close to the ocean, because everybody has a different kind of a relation and cultural values when they are in different parts of the world with the ocean, and thus all communities are affected, but very, very differently, in a very, very different manner. So I think this is a kind of a situation. Oceans हमारी पृथ्वी की जलवायु को बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ रखते हैं, और अगर उनकी सेहत गड़बड़ होती है तो इससे सारे पृथ्वी की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं और बहुत ही हाथ से बाहर चली जाती हैं। तो इन सबको हमें समझना चाहिए। मैं 2-3 चीजें और बड़ी जल्दी से बताना चाहता हूं। पहली बात, अगर इतने बड़े एरिया में प्लास्टिक इकट्ठी हो रही है तो आप समझिए वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ओशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और इसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की पानी में कमी हो जाती है, और वहां के जो जानवर हैं उनको फिर अपनी स्वतः जीवन निर्वाह करने में दिक्कत होती है। दूसरी एक बात यह है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती उस एरिया में, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पूरी लाइट नहीं मिलती है, सोलर एनर्जी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कार्बन सिक्वेशन गेट्स ग्रेटली डिस्टर्ब्ड एंड ब्लॉक्ड एंड thus contributes to the global warming. तो इस तरीके से प्लास्टिक जो है एक तरफ जहां बड़ी उपयोगी है, दूसरी तरफ ये हमारी वैश्विक समस्याओं को बड़ी तेजी से बढ़ाती है और बड़ी क्वाइटली बढ़ाती है, जिसको कि हम सही तरीके से अपने घर पर बैठ करके सुबह जब हम प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करते हैं ठीक से रिलेट नहीं कर पाते। The percentage of plastic bag has been also reported from the middle of the Western and Pacific depths, I have already mentioned. So I think next slide. Now प्लास्टिक आपस में रगड़ खाते हैं और धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से टूटने लगते हैं। तो any plastic piece which is less than 5 millimeter is classified as microplastic, और वो फिर बाद में और धीरे धीरे समय के साथ टूटने लगते हैं और छोटे होने लगते हैं। और जो प्लास्टिक के पीस 0.1 माइक्रोन से कम होते हैं उनको हम नैनो प्लास्टिक कहते हैं। तो इस तरीके से जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो धीरे धीरे फुहार जैसी आती है लैंड की तरफ, उसके साथ में समुद्र का पानी होता है जिसके अंदर वो गर्मी से पानी उड़ जाता है, सॉल्ट रहता है, और सॉल्ट के साथ में ये माइक्रो प्लास्टिक भी जमीन के अंदर आते हैं, जो कि फिर हवा के साथ घूमते रहते हैं और बारिश के साथ भी ये जमीन पर आते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रो प्लास्टिक की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ देयर और भी चीजें हैं जिसकी वजह से ये माइक्रो प्लास्टिक बढ़ रही है। इंडस्ट्रियली हम लोग काफी सारी माइक्रो बीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इन माइक्रो बीड्स का हमारे सौंदर्य प्रसाधन में, टूथपेस्ट में और रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है एज ए फिलर, और इनकी वजह से इनका साइज माइक्रोप्लास्टिक का होता है और ये हर तरीके से पानी के साथ में और जो शहर की नालियां हैं उनके साथ में बह करके नदियों में पहुंचते हैं। तो अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे माइक्रोप्लास्टिक नहीं है,
और बहुत सारे जो हमारे पानी हैं और जिनको हम पीते हैं, बोतल का पानी है जो भी हम फिल्टर करते हैं, ये फिल्टर नहीं हो सकते हैं तो ये पानी के साथ रहते हैं। पानी की सफाई हो जाती है लेकिन माइक्रोप्लास्टिक उसी में रहती है। तो हमारे पीने के पानी में भी है और हर तरीके से बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। तो आप देखिए कि अगर जो एक फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो उससे हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत तरह के असर पड़ते हैं, जिसकी कि अभी पूरी तरीके से अनुसंधान नहीं हो पाया है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इनका दूरगामी प्रभाव बहुत पड़ता है। नेक्स्ट, हिडन हैजार्ड्स ऑफ प्लास्टिक। ये जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं और प्लास्टिक के ऊपर काफी सारे जो और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और प्लास्टिक से वो चिपक जाते हैं। और इसमें खास तौर से डीडीटी और पॉली PAH जैसे जो गंभीर और PCBs, ये सारी चीजें उसके ऊपर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको कहते हैं PH, ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो जब माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे कण आते हैं तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं होते हैं बल्कि उनके ऊपर ये डेडली सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो इससे उनकी टॉक्सिसिटी और उनसे खतरा बहुत बढ़ जाता है, वो डेडली हो जाते हैं। मरीन एनिमल्स कंज्यूम दीज, मिस्टेक फॉर फूड एंड सफोकेट, और वो उनके अंदर हार्मोन डिस्ट्रप्शन का काम करते हैं। और जब हार्मोन डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है एंड एनिमल नॉर्मल ग्रोथ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी डिफेक्टिव। नेक्स्ट, कुछ तो उसके अंदर कैंसर का कारण बनते हैं और कुछ टेरिडोजेंस होते हैं जिससे कि बॉडी डिफेक्ट्स आने वाली पीढ़ी में आ जाते हैं। टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पंप अबाउट 10% ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन इनटू द एटमॉस्फेयर। स्टडीज हैव शोन दैट क्लोरोकॉकस नाम का एक छोटा बैक्टीरिया होता है और जो कि काफी फोटोसिंथेसिस करता है, उसके अंदर भी प्लास्टिक पाई गई है और इससे जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर कमी आती है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के अंदर कमी आती है और ऑक्सीजन के उत्सर्जन में भी कमी आती है। तो इससे जो हमारे वातावरण के अंदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट शुरू होने लगे हैं। प्लास्टिक वेस्ट इन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीजेस सॉइल टेम्परेचर, prevents seepage of water and prevents the addition of water to our groundwater level or to our aquifer and crop growth, because plastic के थैले में जब हम पौधे ग्रो करते हैं तो रूट उसको पेनिट्रेट करके अंदर निकल नहीं सकती बाहर। तो इस तरीके से ये रूट ग्रोथ को कंस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है और उनकी ग्रोथ के अंदर एक बहुत भारी दिक्कत पैदा करता है। नेक्स्ट, single-use plastic is bad, and according to United Nations, anything which is used up and thrown afterwards is a single-use plastic. So single-use plastics are glaring example of problem that throwaway culture has created in our society. We often prioritize convenience over durability and have no consideration of long-term environmental impacts. Globally, we produce 300 million tons of plastic every year, half of which is nothing but a single-use plastic. And these are the single-use plastics which can find very difficult to collect and very difficult to really put for recycling. तो अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दें और इसका इस्तेमाल एक बहुत ही जिम्मेदार तरीके से रोक दें तो हम समझते हैं कि प्लास्टिक की समस्या को हम काफी तरीके से कम कर सकते हैं। और दूसरा, फिर हमको समय मिलेगा कि प्लास्टिक को किस तरीके से और उपयोगी बनाया जाए और किस तरीके से उनका कलेक्शन किया जाए और जिसकी वजह से कि उनकी भी रोकथाम की जा सके, उनके प्रोडक्शन पे भी रोक लगाई जा सके। Our patronage for single-use plastic means we are accumulating waste at a staggering rate, which is unsustainable, undesirable, and unacceptable for well-being of the human being and the well-being of our future generations. Next, प्लास्टिक आर ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। जहां वो क्लाइमेट चेंज को रोकने में सहायक हैं तो वहां पर वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ऑल प्लास्टिक्स आर मेड ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, एंड एज आवर प्रोडक्शन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर पेट्रोलियम एंड गैस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देयर प्रोस्पेक्टिंग इज रिक्वायर्ड
and we have to really draw more and more of petroleum. So उनकी वजह से और throughout the life cycle of the plastic manufacture, at every stage we produce huge quantities of कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस. तो इन सब को होने की वजह से the value chain of the plastic has to be carefully looked at. So much before the plastics are produced, they already have impact on our environment, which is a permanent nature. Climate change and everything is triggered because of the large usage of plastic. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि by 2050 20% of the total petroleum consumption is going to be for the plastic production if the present trend continues. I think that is a huge problem that the mankind is going to face if this continues, and unless we really control this as a very urgent way. Next. Economic cost of plastic is enormous because it affects large number of livelihoods, particularly the hospitality industry, the tourism industry, and the water sports industry. You will never like to go to a tourist place either on the hilltops or in the mountains or the hills or to the coastal area which is choked with plastic. So I think it really affects the international travel, tourism industry, the airline industry, and the people who are associated with it, local tour operators and other people, everybody is affected. And waste generated globally in 2019 was estimated to be $32 billion, and it is supposed to be by 2040 to be 7.1 trillion. So you can see that although it provides jobs, but on the other hand, it also robs the jobs and prevent people from continuing their livelihood because the plastic gets ugly landscape and ugly seascape. Next. Call for eliminating single-use plastic. Our Prime Minister, Mr. Shri Modi ji, has given address to the nation from the ramparts of the Red Fort and said, single-use plastic poses grave threat to the environment. Can we free India from single-use plastic? The time for implementing such ideas have come. Teams must be mobilized to work in this direction. A significant step must come out by October 2022. So I think these are some of the clarion call that the Prime Minister has made. And also our Prime Minister addressed the 74th session of UN General Assembly in New York in September 2019 and urged that UN must see that there is to be free from single-use plastic. The Indian government pledged to eliminate all single-use plastic in India by 2022. Recently, Ministry of Environment, Forest and Climate Change have announced revised plastic waste management rules only a few days ago, which is 22 for eliminating use of single-use plastic in the country. These are very well formulated regulations. The only thing is that we have to implement them. Next. Single-use plastic items are many that are going to be banned by July 2022. These are earbuds, plastic stick, and so on and so forth, PVC, plates, cups, glasses, cutlery such as fork, spoons, knives, straw, and trays, and so on. And also the wrapping, because after you get your goods, immediately the one thing that you do is to throw away all the wrapping and the packaging. So I think for this, there is going to be extended responsibility of the manufacturer, importers, and wholesalers to really take back and make arrangement for collecting all this. More than that, there is going to be a centralized system of registry where all imports and production of plastic will be registered, and everybody has to really file this information, and which is going to be managed by Central Pollution Control Board, so that very clearly the plastic,
how much is introduced in the society, how much the recyclers or the incinerators are consuming it can be checked, and thus an idea can be taken very clearly that what is going to be accumulated, and thus action can be taken. And very stiff fine have been proposed in this new revised plastic rules, which are going to be implemented. In fact, they have been implemented with immediate effect. Next. Now, United Nations at present, particularly UNEP, United Nations Environment Programme, working very hard to really hammer out a global treaty on plastic. This session is going to take place from 28th of February to 2nd of March, where 100 nations have already agreed. And I think some kind of arrangement or agreement has to be really working out, and people are making a very serious effort that a global treaty should come. We have got a treaty on climate, we have got a treaty on biodiversity, we have got a ozone treaty, and we also have a treaty on persistent organic pollutant. And each of them have a specific multilateral environmental agreement. Now, similarly, plastic also need a treaty in gaining the momentum. UNEP is preparing to place a proposal for multilateral treaty to combat menace of global plastic pollution at its meeting, which is going to start on 28th of February. And if everything goes well, I think a committee is going to be constituted, which will perhaps take 2 years to finally come up with an agreed draft for a convention on plastics. So I think this is what is being at present at a global level is being considered. Why global level? Because if some countries control and others don't control, the problem doesn't get solved. In fact, those countries which are the biggest producers of plastic, not necessarily the biggest dumpers of the plastic, because plastic waste keeps on traveling across the seas and continents and are really disposed of in places where it is not produced. So I think this is how the plastic waste gets international travel. And also along with this, since it is now gradually getting banned, China was the biggest importer of the waste plastic, but they have stopped, and thus the other countries have been chosen, and where the money is provided and easily the large big countries where large quantities are produced are transshipped to these small countries where they are dumped. So where the largest producer is there and where the largest dumpers are there, they are very geographically apart because of this kind of arrangement that is made by the countries concerned. Next. So I think all countries. So thank you very much for giving me this patient hearing, and now we will have a short film for you to have a very first-hand, or I should say a very clear experience of the plastic problem. We are now playing the video clip. Once again, we acknowledge. Ironically, there's a recycling symbol. Yeah. The video got stuck somewhere. Let us see. Okay. Is it still going on? Okay. So friends, you must have seen that how this whale was tried to be rescued. Professor Varshney, would you like to narrate this video? Yes, I think I will briefly just Yes, describe the main message of this video. You see that a whale was found to be on the sea side, or at least on the seashore,
And it was very surprising that how the whale has come. So they thought that perhaps it got stuck. So I think the people came and they tried to really push the whale back into the ocean. But soon after, they will find that the whale again came back on the seashore and was reluctant to go back. They tried once or twice, but they failed. And then finally they thought that it is better to kill the whale rather than to see this kind of a problem that we find this animal is going through. After they killed, then the university people, Wijen University in Netherlands, they really dissected and they found huge quantity of plastic bag inside the whale, which means that the whale was suffering from this kind of agony. The whale was unable to eat more and thus was feeling exhausted and was unable to really maintain its buoyancy and was finding it difficult to have a normal swim. So I think the amount of material that came out of the stomach of this whale is incredibly large and shows that how the animals are able to ingest. So I think there are three ways by which the animals get trapped or kill themselves. One is actually by ingestion and then trapping. The used fishing nets trap these animals and injure them, and this is what is happening. This is at the same time a large amount of plastic gets deposited on the seafloor and thus the benthic flora and fauna gets affected. They do not get the sufficient light, they do not get the sufficient oxygen, and thus they suffer and suffocate. So I think this is what I have already mentioned, that animals, whether microorganisms or whether planktons, phytoplanktons or large whale, nobody is spared from the curse of the waste and throwaway plastic and single-use plastic. Yes, Professor Varshney, very interesting and very enlightening indeed. We all learnt, and starting from thermosetting to thermoplastics, we are receiving some questions. I am afraid that we can take large number of questions, but let us try to have couple. I request couple of them. I request Dr. Shimre to take on those questions, please. Yeah, thank you. Thank you for the very enlightening lecture on plastic pollution, sir. There are several questions, but I'm going to stick to only a few. So the first one is a kind of trivia question. So this will be beneficial for all the viewers in general so that states can think about it. So which state was the first to ban plastic carry bags in India? Can you just tell us, sir? Yes, I think the hill states were the first to get alerted about the menace of this plastic, and they are one which have thought about this important. Sikkim was the first state where the plastic bags were banned, and they have taken this as an important thing to maintain the beauty of the mountain sides and to see that the traffic or the tourist traffic doesn't get distracted because of the blight that is created by the flowing and the bags. Next. Yeah, thank you. Sir, yes, you mentioned about several use of plastics in our daily lives right from the beginning, right from the morning when we brush our teeth till the time we go to bed when we switch off the lights. So that's where, you know, plastic has reached our lives. And even during this pandemic, we saw how much we were dependent on plastics. For example, through the use of masks, through the use of face shields, through the use of gloves, and all kinds of things. And that has also caused another set of havoc besides the pandemic, the COVID-19 itself. Besides that, we have been facing this, enormous production as well as use of plastic-based products such as those during the pandemic.
So that shows how much we are dependent on plastics in our daily life. But my question is, now that we're so dependent on plastic, but at the same time we want to get rid of using plastic as much as possible, especially the single-use plastic as you mentioned. What are the biodegradable plastics that we are talking about, and can they really be a perfect substitute to conventional plastics? That is a question that I have. I think this is a very important question, and let us understand. Sometimes when we go to supermarket or some kind of a shopping place, we find that there are certain bags which are written as biodegradable, but we must understand the difference between biodegradable and biodecomposable. When we say biodegradable, it only means that while making plastic, certain amount of starch or some other compound has been added, which is attacked by the bacteria and the enzyme that they produce in nature, to which they are addicted, and thus they are broken, and they are broken into smaller chains, not that they are decomposed. When we talk of decomposable plastic, we talk that they are really decomposed into individual elements, that is carbon, hydrogen, and oxygen, or whatever it is. So I think that biodegradable is only something which allows things to degrade, but only up to a certain point, but not completely. So it doesn't get rid of the plastic, but at the same time, it gets them into smaller and smaller fractions. So this is biodegradable, but biodecomposable is entirely a different ballgame, where completely things are changed and are back to the normal elements of the nature. So I think that this is a difference that we must understand. Yes, and Professor Vash. This perspective, yes. Yes, Professor Vash, this has been indeed been very enlightening, very eye-opening session today. And what else we could have asked for on this auspicious day of celebrations for the National Science Day. Viewers, we are coming back on 2nd of March, this time on Wednesday, when we are going to have Dr. Randeep Guleria with us at CIT NCERT studios, and he will be talking about how to stay healthy in today's times, which is also a very apt topic for discussion nowadays. Today's session was in continuity with the session with Rajni Ranjan Rashmi's session on 4th of January, which was on stabilization of climate challenges and opportunities for India. All these videos are uploaded on our NCERT official YouTube channel, and you can also see in our event section of our website www.ncert.nic.in. So we are going to meet again on 2nd of March, Wednesday, at the same time, 10 o'clock. Thank you very much. Keep safe. Stay healthy.